बालाजी टेलीफिल्म्स की मालकिन है एकता कपूर, जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया में बहुत ही बड़ी पहचान। लेकिन सीरियलों की दुनिया में जिस एकता कपूर का राज चला है, उनके बारे में ये जानकर आपको थोड़ा सा हैरान होने का मानना तो पड़ेगा कि मौका मिल गया होगा। जैसा कि आपने सुना, एकता कपूर ने बताया कि वो 10 साल पहले साल 2008 में अपने सीरियलों को लेकर काफी परेशान हो गई थी, जब टॉप शो से बाहर थे उनके शो। एकता कपूर ने कुछ ऐसे ही बातें कही है जो एक बात की तरफ इशारा करता है कि एकता कपूर के लिए साल 2008 शायद सही नहीं था। बैड ईयर कहते हुए उन्होंने अपने साथ हुए बुरे वक्त का भी सच सामने लाकर रखा, जब वो जागरण सिनेमा सुमित 2018 के मौके पर पहुंची बात करने के लिए। वहाँ एकता कपूर ने ये भी बताया कि इस तरह सारे सीरियल की कमाई, टीवी में होने वाली कमाई को उन्होंने अपनी 2 फिल्मों में डुबा दी। 2 फिल्मों की वजह से उनकी कमाई किस तरह डूबी थी, आखिर कौन सी 2 फिल्मों के बारे में एकता कपूर ने बताया है, ये तो आपने सुन ही लिया। वो फिल्में थी ग्रैंड मस्ती और साथ साथ में फिल्म उड़ता पंजाब, जिसके लीक होने की वजह से वाकई में एकता कपूर को काफी परेशानी से जूझनी पड़ी। आपको बताना चाहेंगे हम, एकता कपूर टीवी इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा मशहूर फिल्म मेकर और टीवी सीरियल मेकर कहलाती है। एकता कपूर के टॉप शोज की बात की जाए तो टॉप शोज में उनके कई ऐसे शोज हैं जो कि टीवी इंडस्ट्री में सालों से राज करते रहे हैं। बता दें आपको, फिलहाल उनके सीरियलों में, क्योंकि सास भी कभी बहू के बारे में नहीं, लेकिन हाँ, कुमकुम भाग्य काफी चर्चा में है। कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य और साथ साथ में सीरियलों के मामले में और भी कई शोज हैं जो काफी समय तक राज करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, क्योंकि सास भी कभी बहू, ये शो लंबे समय तक टीवी पुल में राज करता रहा। कसौटी जिंदगी की और तो और कहानी घर घर की कसम से बड़े अच्छे लगते हैं ये शोज, उनके टॉप शोज रहे हैं। तो वही आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे हम, टीवी शोज के मामले में नागिन ड्रामा की वजह से नागिन सीरियल और उनके दोनों ही सीक्वल को लेकर एकता लगातार चर्चा में रही। 43 साल की उम्र में एकता कपूर ने टीवी इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी पहचान बनाई, जो कि बॉलीवुड के बड़े एक्टर जितेंद्र और उनकी शोभा कपूर की बेटी है। 7 जून साल 1975 में जन्मी एकता कपूर आज टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहलाती है, जिन्होंने तमाम फिल्मों को प्रोड्यूस किया, तमाम फिल्मों को डायरेक्ट भी किया है। इस साल उनकी फिल्म लैला मजनू आई, जिसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। तो वही वीरे दिवेरी भी उन्हीं की फिल्म रही। वही रागिनी एमएमएस और उसके दूसरे सीक्वल को लेकर भी एकता कपूर काफी चर्चा में रही है। बताते चले आपको, एकता कपूर के एक भाई भी हैं जिनका नाम है तुषार कपूर। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता तुषार कपूर आज बॉलीवुड इंडस्ट्री से काफी दूर हैं, लेकिन एकता की पहचान बॉलीवुड से लेकर टीवी के मशहूर हस्तियों में आज काफी ज्यादा है। One viewer will need 52 shows, or if he or she only watches shows on the weekend, and like that there'll be different tastes and different viewers. Now you're talking about 5 players who, even if they work day and night, will make 25 shows or 30 or 40 shows at max. Do the math. We're talking about 500. I'm not good at math, I was just doing it in my head. I'm just telling you, 500 million mobile users, 5 platforms which will probably at the max make about 200 shows, and yet variety entertainment for 500 million people with smartphones. But that's another thing, right? I mean, the other aspect of television content as we know it now, and I mean television content on, or web series as they call it, is the binge watching aspect of it. Yeah. I mean, we were always made to believe that actually audiences have very low attention spans. Yeah. But here we are watching, you know, so don't make a 3-hour movie, it's too long, or 3.5 becomes too long, and then we need to shorten it, shorten it, shorten it. But it's actually not to do with the amount of time you'll spend, it's about how much time you'll spend at your convenience. Convenience is the key word here.
You're at home, in your bed, you'll watch 2 hours if you want. If it's interesting, you'll watch 5. But when you're in a theater, you have to travel to the theater. You have to spend those 3 hours there, sitting on that chair, and then walk out only when the movie is over. So this convenience that it gives you is the choice that you have now. You know, you've said this before, and I'd like you to elaborate on this, is that 2016 was a turning point in your life. You were extremely depressed so far as your film business was concerned, because you had back-to-back films that did not do commercially well. And was there a moment of epiphany where you realized, this movie thing needs to be relooked at? And then you actually shut it down. I think it happens to all of us. I happened to me in 2008. I think it's an 8-year cycle. I had 35 shows out of 50, and then suddenly I was out of top 50 shows. For someone who has worked every day of their life to have 1 year of no work. So how much can you sit on concepts, keep people in the office and say you're working, but actually you have no work? So I've had that happen in 2008. So what happened in 2008? Exactly. I just suddenly lost flavor with the channels. My shows became redundant, and I was told that I lost the touch. So I have to reinvent. So were the ratings falling down? Actually, the systems changed. Now, like there's Bark, there was another system, and that changed and went into smaller towns where cable connections were new. So the old shows who were going on for 4 years were no longer being watched because they couldn't catch up with the story. So many reasons, but basically I lost flavor and I was out of favor, and I was clearly told that I don't know television anymore, and I had to work and create and recreate and rework and realign. 2016 was sad because the 2 films that were theater dependent, where you don't have any pre-sales, one didn't do well and the other one got leaked. And that caused me a lot of losses. Because when Which one are you talking about? Grand Masti and Udta Punjab got leaked. And but Grand Masti did well, right? No, it didn't. Oh, didn't, okay. It didn't, because it was out on people's mobiles 40 days before the release. So I lost all the money I had made, and I make very sensibly, I make money on TV. If anyone knows, we save on every episode, and suddenly in one movie it was all gone. And so that made me realize that you can have a bad year, but it never really took away my beliefs, because I of course I had to go through various boards and sit on that board table and speak about the fact that I promised never to make films because I clearly don't know how to make films. But I said the same thing in 2008, and you really will have those years again where you think you can't do your job well, but that doesn't mean you don't do your job. You keep doing it. You show up at work every day, and one day hope for the tide to change. Was that the point where you took the decision to start Alt Balaji? No, I decided that in 2015. 2016 came as a big bummer because I couldn't raise funds because of the fact that the films had not done well. But yeah, I had decided in 2015 with Sameer sir that we'll start an OTT platform, yeah. But as a person, you've headed this conglomerate, as we'd call it, a huge empire, television empire. We see people walk outside your building, and it's half a temple to begin with. So I can imagine why everyone is praying before they go. There is a temple inside. So there is a temple, right? There's an actual temple out there. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।